Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello students, join our online course for GPAT Niper Drug Inspector to get assured amazing rank. Hello my dear students, welcome back to the Fundamental Pharmacy. If you are preparing for GPAT Niper DI Pharmacist exam, then this video is going to be very important, knowledge oriented and useful for your preparation. So it's my request to you, please watch this video until end. My dear students, in this video we are going to see classification number 12, that is antipsychotic drugs used in the mania and hallucinogens. Believe me, this classification is very important. A lot of times they already ask question on this, so it's my request to you again, please watch this video until end. Students, we have already seen 11 classifications, so if anybody has not seen those videos, please go in the channel's playlist and watch all these videos. First of all, you should know what do you mean by psychiatric illness or psychiatric diseases. Examples of psychiatric diseases or illness is nothing but the schizophrenia, mania, depression, bipolar disorders, then phobia, anxiety, obsessive compulsive disorders. Now the psychiatric illness are divided into two types depending upon whether insight is present or insight is absent. But what do you mean by insight? Insight means awareness. Insight means awareness or knowledge. Suppose if patient is suffering from schizophrenia and he is not aware that he is having some psychiatric problem, so that is known as an insight absent. Now suppose a patient is suffering from obsessive compulsive disorders, so patient knows he is suffering from any kind of psychiatric disease, so insight is present. So depending on that, psychiatric illness are classified into two types. First one is known as a psychosis. So in the psychosis, insight is absent, means यहाँ पे patient को मालूम नहीं होता है कि उसको कोई psychiatric problem है. So psychosis, insight is absent. Now this is classified into two types. Schizophrenia is known as a major psychosis, and second one is affective disorders. In that you have mania, depression and bipolar disorders. Mania, depression and bipolar disorder. Now second type of psychiatric illness is a neurosis. So where insight is present, यहाँ पे patient को मालूम होता है कि उसके साथ में कोई psychiatric problem है. So in that you have obsessive compulsive disorders, जहाँ पे repetitions होते हैं. जैसे मान लीजिए कि किसी को 10 मिनट के बाद में हाथ धोने की आदत होता है, मतलब उसका हाथ गंदे नहीं हुए फिर भी वो 10 मिनट के बाद में जाके हाथ धोएगा. So that is obsessive compulsive disorder. जैसे होता है अभी आजकल मोबाइल है, आपको कोई मैसेज भी नहीं आया व्हाट्सएप पे, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, फिर भी आप 5 मिनट में आपका मोबाइल चेक कर रहे हो. So that is nothing but the obsessive compulsive disease or disorder. Then phobia मतलब किसी चीज का डर. जैसे बहुत सारे लोगों को लिफ्ट का डर होता है, हाइट का डर होता है, पानी का डर होता है ना. जैसे हाइड्रोफोबिया, ओके, हाइट का फोबिया. सो लाइक दैट. एंजाइटी मतलब फालतू का टेंशन. Then this post traumatic stress disorder and bulimia. Bulimia is nothing but the disorder of your eating. Eating का disorder होता है bulimia. All these psychiatric illness is because of the imbalance between dopamine and acetylcholine. Okay, so imbalance between dopamine and acetylcholine. If they are increased, this dopamine acetylcholine is increased in your brain, increased in this part, substantia nigra. What will happen? Hyperkinetic state will be there. Huntington's disease will be there. Tourette syndrome, tardive dyskinesia. Tourette syndrome मतलब क्या? You might have seen one movie known as Hichki. हिचकी एक मूवी है, उसमें रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस है, उसको ये टूरेट सिंड्रोम होता है या फिर टरेट सिंड्रोम होता है. इफ देयर इज इंक्रीज इन एसिटिलकोलिन डोपामाइन लेवल इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा, यू विल सफर फ्रॉम हाइपरकाइनेटिक स्टेट, हंटिंगटन डिसीज, टूरेट सिंड्रोम एंड टार्डिव डिस्काइनेशन. नाउ इफ दिस इंक्रीज इज neurotransmitter is there in a limbic system or mesocortical tract, so you will suffer from paranoia, euphoria, psychosis, schizophrenia. So if this increase is there in a hypothalamus, you will suffer from hyperprolactinemia. Now if there is a decrease in this dopamine acetylcholine ratio in the substantia nigra part, you will suffer from hypokinetic state, Parkinson disease, extrapyramidal symptoms and dystonia. If this decrease in the ratio of acetylcholine dopamine level is decreased in case of hypothalamus, you will suffer from hyperprolactinemia. Now what are the signs and symptoms of schizophrenia in the adults? Schizophrenic patient में क्या क्या signs symptoms होंगे? So nervousness will be there, restlessness will be there. Restlessness मतलब क्या? एक जगह पे बैठ नहीं सकता, वो टिका नहीं रहेगा, ठीक है.
डिप्रेशन होगा, उसको एंजाइटी होगा, लॉट ऑफ थॉट्स विल बी इन द माइंड, ट्रबल इन द कॉन्सेंट्रेटिंग, मतलब पर्टिकुलर काम में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, अनक्लियर थिंकिंग, उनके जो थॉट्स होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, डिमिनिश्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसकी एनर्जी जो है वो लो रहेगा, देन सीवियर डिक्लाइन इन द वर्क एंड परफॉर्मेंस, वो जो वर्क करता है स्कूल में या फिर जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे परफॉर्मेंस उसका कम होगा, सोशल विड्रॉवल, मतलब वो सोशली आइसोलेट हो जाएगा, वो घुल मिल नहीं सकता किसी में. So these are the early signs of schizophrenia, which is known as major psychosis. Now signs of mania. So mania जो पेशेंट होते हैं, मेनियक पेशेंट, उसमें क्या होता है कि लेस स्लीप, वो सोता नहीं है, कम सोता है, देन रिस्की बिहेवियर, तो बिहेवियर उसका बहुत ही रिस्की होता है, मतलब जैसे नंगी बिजली के तार को जाके पकड़ना, रिस्की बिहेवियर, जैसे जुआ खेलना वैसे. नाउ इरिटेबिलिटी, बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होता है पेशेंट मैनियक. फ्लाइट ऑफ आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज एक साथ उसके माइंड में आ जाएंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी बात करेगा वो, रैपिड स्पीच, देन हाइपर सेक्सुअलिटी, सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा उसका हाइपर सेक्सुअलिटी बिहेवियर रहेगा. सो दिस इज द साइंस ऑफ मैनिया. नाउ विल सी द ड्रग्स यूज्ड इन द साइकोसिस और एंटी साइकोटिक ड्रग्स. यहाँ पे याद रखो, आपका पहला क्वेश्चन कवर हो सकता है. एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर नोन एज अ न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स और they are also known as a major tranquilizers. Antipsychotic drugs are known as a neuroleptic drugs or major tranquilizers. So tranquilizers are of two types, major tranquilizer and minor tranquilizers. So major tranquilizer means antipsychotic drugs and minor tranquilizer means anti-anxiety drug, sedatives. Now antipsychotic drugs are classified into, mostly they are classified into two types. First class is nothing but the typical antipsychotic drugs. जो typical antipsychotic drugs होते हैं, so they are further divided into these category. जो पहले वाले phenothiazines, butorphanol, thiazolantine and other heterocyclic compounds, so they are known as a typical antipsychotic drugs. Typical antipsychotic. And second one is atypical antipsychotic drugs. Atypical, typically क्यों बोलते हैं? So remember, typical antipsychotic drugs, they are also known as the first generation antipsychotic drugs. Atypical antipsychotic drugs, they are known as a सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग. जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं उनको एक एडवर्स इफेक्ट होता है नोन एज अ पार्किंसोनिज्म. जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स वाले जो है, दे विल प्रोड्यूस पार्किंसोनिज्म और सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म, दैट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा पिरामिडल एडवर्स इफेक्ट्स. सो जो फर्स्ट जनरेशन या फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ जाते हैं, एटिपिकल वाले में बहुत ही कम आता है. ओके, सो नाउ typical antipsychotic drugs, they are further divided into depending upon their chemistry. First one is a phenothiazine, इसमें phenothiazine ring structure रहेगा. Second one is a butorphanol, इसमें butorphanol रहेगा. Third one is thiazolantine and fourth one is a other heterocyclic compound. तो phenothiazines are also further divided into three types. Those phenothiazine which are having aliphatic side chain, जैसे dimethyl aminopropyl. So in that you have chlorpromazine and trifluorpromazine. So out of that, chlorpromazine is known as a large active because chlorpromazine को बहुत सारा actions होता है. Chlorpromazine is a antipsychotic, is a seen as depressant, it is a antihistaminic, it is a local anesthetic, it is having also antiemetic action. So lot of actions are there, because of the lot of actions chlorpromazine is known as a large active. This trifluorpromazine, so obviously इसमें you will see trifluor means 3 fluorine atoms will be there in the trifluorpromazine. Now second in the phenothiazine, piperidine side chain containing compounds. So in that you have thioridazine is the example. Thioridazine is the example. So here piperidine side chain will be there. Piperidine 1,3 nitrogen. Piperidine in the 6 member ring. Now third in this phenothiazine is a piperazine side chain. Here you will have piperazine heterocycle 1,4 nitrogen in the 6 member ring. So trifluoperazine and fluphenazine. Trifluoperazine and fluphenazine is the, so phenothiazines are classified into 3 aliphatic side chain containing compounds: chlorpromazine, trifluoperazine, piperidine containing side chain thioridazine, and piperazine containing side chain trifluoperazine and fluphenazine. Now second class of typical antipsychotics, that is nothing but the butorphanol. So butorphanol, in that you have haloperidol, trifluoperidol and fenfluridol. तो यहाँ पे याद रखना है कि haloperidol is the drug typical antipsychotic which is having highest extrapyramidal adverse effect. तो haloperidol जो है उसको
हाईएस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का एडवर्स इफेक्ट होता है, सो इट कैन प्रोड्यूस ए पार्किंसनिज्म। देन ट्राइफ्लोपेरिडोल, उसका ही डेरिवेटिव होता है ट्राइफ्लोपेरिडोल, इसमें तीन फ्लोरीन आइटम होते हैं। नाउ फेनफ्लोरिडोल, सो आउट ऑफ दिस फेनफ्लोरिडोल इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, फेनफ्लोरिडोल क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। देन थर्ड कैटेगरी इन द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, दैट इज अ थायोजांथिन डेरिवेटिव नोन एज अ फ्लोपेनथिक्सोल। फोर्थ कैटेगरी में आता है आपका अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, example is pimozide and loxapine. Now these all phenothiazines, butyrophenone, thioxanthine and other heterocyclic compounds, they are known as a typical antipsychotics or first generation antipsychotics. They will have a adverse effect of extrapyramidal symptoms. Okay, second class is nothing but the typical antipsychotics. So in that you have clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, then aripiprazole, ziprasidone, सल्फराइड एंड जोटेपिन। सो याद कैसे रखेंगे, पिन, पिन मतलब क्या, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्वाइटापिन एंड जोटेपिन। पिन के बाद में क्या आएगा, डोन, पिन डोन। सो डोन में क्या आएगा, रेस्पिरिडोन, ठीक है, रेस्पिरिडोन, जिप्रासिडोन, रेस्पिरिडोन एंड जिप्रासिडोन। उसके बाद में आएगा प्राजोल, ओके, पिन डोन प्राजोल, एरिपाइप्राजोल। सो पिन डोन प्राजोल एंड सल्फराइड, sulfide, so that is a atypical antipsychotic। तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, क्लोजापिन इज atypical antipsychotic, रेस्पिरिडोन इज atypical antipsychotic। तो क्वेश्चन आ चुके हैं इनके बारे में। we'll see the classification again, antipsychotic drug again। so whatever typical antipsychotic drugs are, they are known as a neuroleptic and they are the D2 receptor blocker। क्वेश्चन आ चुका है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डोपामाइन रिसेप्टर 2 blockers। So they are the D2 receptor blockers. They will have high affinity towards the D2 and 5HT2A receptor. Okay, तो ये डोपामाइन रिसेप्टर 2 जो है और सेरोटोनिन रिसेप्टर 2A जो है, उनके लिए एफिनिटी ज्यादा रहता है इनका, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। So in that we have seen phenothiazines like chlorpromazine, thyroidazine, trifluoperazine, fluphenazine. Then thioxanthines like propanthixol, thioxanthine. Okay, then butyrophenones like haloperidol, droperidol and penfluridol. Then miscellaneous, in that you have pimozide, loxapine and molindone. Now atypical antipsychotics, they act by other mechanism, so they have low dopamine and 5HT2 receptor affinity. So in that clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, loperidone, paliperidone, ziprasidone, lorasidone, then aripiprazole, asenapine, sertindole and zotipine. These are the drugs known as atypical antipsychotics. Now drugs used for the mania and bipolar disorders. तो mania में कौन से drugs यूज करेंगे, bipolar disorder में कौन से drugs यूज। So remember, lithium carbonate is inorganic lithium salt. Lithium carbonate, it is a drug of choice in the mania. So remember lithium carbonate, and it has a nephrotoxicity. Remember. Now second is anticonvulsant category. So in that you have sodium valproate, carbamazepine and lamotrigine. So lamotrigine, sodium valproate, they are known as a broad spectrum anti-epileptic drug. Carbamazepine is nothing but it is a drug of choice in the trigeminal neuralgia. याद रखो, sodium valproate is a broad spectrum anti-epileptic drug and it has a variety of mechanism. You have to remember, question आ चुके। Now atypical antipsychotics, in that you have olanzapine, risperidone, quetiapine and aripiprazole. Now hallucinogens, तो hallucinogens का क्लासिफिकेशन देखें। तो hallucinogens, they are also known as psychotomimetics, then psychedelics and psychodysliptics. So hallucinogens means what? They are nothing but the CNS stimulants. They will stimulate your CNS nervous system in such a extent that you will suffer from psychosis. तो ये hallucinogen क्या करेंगे, psychosis प्रोड्यूस करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, psychotomimetics, psychedelics, then psychodysliptic, or they are hallucinogens. So in that you have indole alkylamines like lysergic acid diethylamine LSD, lysergic acid amide, psilocybin, harmine and dimethyltryptamine. So ये lysergic acid जो है वो drug of abuse होता है, and ergot alkaloids are they are found in the form of salt of lysergic acid. Remember, so lysergic acid क्या है, drug of abuse. So ये hallucinogen है, ये psychosis produce करेगा, ये आपको पागल बना देगा। In that second class is a phenylalkylamines. So in that you have mescaline, then ecstasy. Ecstasy is a trade name of methylene dioxymethamphetamine.
देन याबा, याबा इज ऑल्सो ट्रेड नेम। ये जो इक्टासी याबा है ये ड्रग ऑफ एब्यूज होते हैं, उनमें क्या होता है मिथाइल एम्फेटामाइन प्लस मिथाइल ज़ैंथामाइन, मिथाइल ज़ैनामाइन। देन थर्ड कैटेगरी आता है ए अराइल साइक्लोहेक्सिलअमाइन, इन दैट यू हैव फेनसाइक्लिडिन। एंड लास्ट कैटेगरी आता है आपका कैनाबिनॉइड्स, सो इन दैट यू हैव टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। तो ये जो कैनाबिस हेम्प होता है, गांजा जो होता है उसमें का जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, इट इज आल्सो अ ड्रग ऑफ एब्यूज। दे विल इंड्यूस साइकोसिस एंड हालुसिनोजन, दे विल प्रोड्यूस हालुसिनेशन। ठीक है, हालुसिनेशन मतलब क्या कि कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, तो दैट इज हालुसिनेशन। भगवान आप नहीं हो गए फिर भी आपको लग रहा है आप भगवान हो, दैट इज हालुसिनेशन। जो चीज नहीं है फिर भी वो लगना उसको बोलते हैं हालुसिनेशंस। सो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इज अ हालुसिनोजन। You can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist exam preparation 2-3 times before exam and qualify with a very good rank in a short period. You can see we have very much promising result from past few years. Thousands of students they are placed in the Niper. You can also join our GPAT Niper 2024-25 crash course. Here you will have live lectures, recorded lectures, subject wise and chapter wise sessions will be there. Study material, online test fees, everything is there in a 8,000. Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector, read twice and qualify 100